参见同志民主到湾环境光辉被训练现在我当年了上次在不中说报告我是一个今天是我送到3届变化到开的想今年是年给别的学习也因为我就有这件事情的是发达没事这个地方基本上是是今年是年给别的学习今年的话去年的学习非常大他们有学的特别是我的学习今年是年给别的学习We have come all the way from Darjeeling and the energy over here, we visited a lot of pilgrim sites yesterday and it's a great joy to be here. My name is Gambold, I'm ambassador of Mongolia to India and I'm happy, very happy and excited to be part of this very important and interesting, challenging initiative. The Bodhgaya Marathon is run for peace, for global peace. And the main reason why I'm here is of course for the global peace, and also this year we celebrated the 70th anniversary of establishing diplomatic relations between Mongolia and India. Though our countries have long standing history, many thousand years back. So I'm here to continue this good cultural and historical heritage. Thank you very much. Hi. I'm General Sukriti Singh Daya. I'm the Commandant Officers Training Academy here, and that's my lovely wife Nandini. We are privileged to be part of this wonderful and momentous occasion. Love to be up early. Stay fit. Stay happy. नमस्कार, ये दूसरा बोधगया मैराथन इस साल यहाँ पे किया गया बोधगया में, और इस मैराथन का सबसे इम्पोर्टेंट जो
एलिमेंट था वो ये कि इसमें 3000 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे और 300 के करीब फॉरेनर्स थे, 300 के करीब इसमें आर्मी के कैडेट्स थे। हमारे साथ चीफ गेस्ट जो थे वो कुंडलिंग रिम्पोचे, वेनरेबल कुंडलिंग रिम्पोचे जी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेशल गेस्ट जो थे उनमें जनरल दहिया जो यहाँ के जो बोधगया के जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट है वो थे और मंगोलिया के राजदूत भी यहाँ उपस्थित थे। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जनरल साहब ने 10 किलोमीटर का रेस भागा, उनके साथ उनके मैडम भी भागे और साथ ही साथ यहाँ पे मंगोलिया के जो एम्बेसडर थे वो उन्होंने 5 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट किया। बड़ा उत्साहजनक माहौल था यहाँ पे और सुबह से 5:30 बजे से लोग काफ़ी मस्ती में यहाँ पे वार्म अप वगैरह कर रहे थे। रेस बड़ा स्मूथली हुआ है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे रास्ता वगैरह उतना कंट्रोल में नहीं है ट्रैफिक की और नज़रिए से, बट फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से ये रेस कंप्लीट किया गया और अवार्ड्स वगैरह सबको दिए गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मैसेज जो है गौतम बुद्ध का वो है मैसेज मन और तन का, कि मन की शक्ति और तन का जो सपोर्ट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज की युवा और आज के लोग जो भी कोशिश करें ज़िंदगी में वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो एक मैसेज था यूथ के लिए यहाँ का जो कि मेरे ख्याल से सब समझ पाए और मैं आशा करता हूँ कि इसके चलते हुए आगे भी इन्होंने काफ़ी कुछ प्लान किया, सक्सेसफुल होगा, कोई चिंता नहीं। थैंक यू। Hello everyone, I'm from Bhutan and I really enjoyed the Bodhgaya run for global peace. Hello, my name is Chai. I'm from Vietnam. I'm Vietnamese and this is my first appearance in Bodhgaya. Hello everyone, I'm Dr. Sunita Godara, 92 Asian Marathon Champion and here in Bodhgaya. Bodhgaya Marathon, now I have seen the marathon, how the 42 kilometers started, 21 kilometers and 10k and then 5 kilometer. And now I can say this is marathon with a difference. Lot many monks here, you know, this is, ये जो जमीन है, ये बोधगया बुद्ध की जमीन है। My name is Irina. I'm from Russia, St. Petersburg. It's very nice experience in the first 21 kilometers marathon. Bodhgaya Marathon is wonderful. Very I'm glad. Thank you. मेरा नाम बबली वर्मा है और मतलब यहाँ का रूट तो वेरी टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। जैसे हम लोग के यहाँ FI में क्रॉस कंट्री होती है वैसा रूट था और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटी भी अच्छी थी। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, लखनऊ। बोधगया मैराथन पहली बार अटेंड की हूँ। मेरा नीतीश कुमार नाम है। मेरे को ये कोरिया जाने का ये मिला है टिकट। My name is James Korir from Kenya. I am today's winner for Bodhgaya Marathon. And my experience is that the route was very okay, everything was fine. It was being designed in a very eloquent manner and actually this route was very awesome. हेलो, मैं यूपी से अयोध्या से रहने वाला हूँ। यहाँ बोधगया मैराथन में मैं फर्स्ट विनर हूँ। मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
Ahmed Shukur. I running 42 kilometer. I am number 1. This road is too much hard, but I try anything for a win. I win. My God is helping me. Thank you. My name is Kinle. I am from Bhutan. So I came here 3 days ago, and this Marathon for Global Peace, it has been a fantastic experience. I believe it's happening every year, so I hope everybody can join from next year onwards. Thank you. My name is Harish. I have ran 42 kilometers full course, and I ranked 3rd position. This time I have visited first time to Bodhgaya, and the scenery was peaceful, and I feel it was a really holy place. And then my experience, even it was first, but I enjoyed really. I want to visit once again in next year. Thank you.